Good morning, students, 7th standard. Today we are going to start our new chapter, metals and non-metals. That in our environment we see metals and non-metals in our daily use, in our surroundings. Okay, we require metals as well as non-metals to uh, as a part of our life. We use so many metals in our daily life, just like precious metal like gold, silver, and metals like aluminium, brass in the form of our utensils and all, as well as we need non-metals. Non-metals is also a part of our life. Got it? Now see here, which are the properties of metals and non-metals, to whom we call metals and to whom we call non-metals. Which are the properties? There are certain properties of the metals. On the basis of that, we say that it's a metals. Okay. Now, what are three types in which the elements are generally classified? That we know. Now, what are the metals and non-metals that we use in everyday life? That I told you now. All the subjects or the materials in the world are made up of the elements, compound, or they are mixtures, right? Element means compressing only one kind of atom. Compounds, more than two elements, different atoms compresses is called compound. And mixture, there is the mixture of various kinds of compounds, so having different characteristic. Now the scientists classified all the elements into three general type, which are metals, non-metal, and metallites. Which are metals, non-metals, and metallites. What do we call metal? Now is here: gold, silver, iron, copper, aluminum, magnesium, calcium, sodium, platinum are the few metals. Metals have luster. मेटल्स हैव लस्टर. आपको दिखता है ना, चमकता है ना, हाँ, तो उसे लस्टर बोलते हैं. द मेटल्स आर हार्ड, वायर और शीट कैन बी फ्रॉम द मेड metals. Okay. Now metals are good conductor of heat and electricity. Metals are lost their valence electron to produce positively charged ions, that is cations. Means metals की जो वैलेंसी है, वैलेंसी पता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट. तो ये जो प्रॉपर्टी, उसके वजह से ये चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड मेक आयन्स, इट्स कॉल्ड कैशंस. Then the physical properties of metals. Now we see the physical properties of metal. First one is physical state. Physical state is very important. Mainly the metals are in a solid state, but some metals are in a liquid state. Now we see here, under the ordinary temperature, metals stay in a solid state. However, metals like mercury and gallium are the exception, which are in a liquid state even at room temperature. That we know, mercury that we use in thermometer, it's always in liquid state, but then still it is considered as a metal. Got it? And gallium is also considered as a metal. You might have seen the doctor pressure gauge to measure blood pressure, during which visit in a dispensary accompanying your relatives. In that, you might have seen a grey colored liquid in glass tube. What is that metal? It's a mercury. Then first, what? Physical state. Physical state means, first physical state is, it's generally in solid state. Second one is a luster. Now, take a copper vessel at your home, scrub them and lemon and rinse with water. Observe the luster before after cleaning. Light gets reflected from the clean and or freshly cut surface of the metals and the metal looks luster. ये भी होता है, ये भी आप ट्राई करके देख लो कि लेमन ना, आप घर पे कॉपर का कुछ वेसल्स है, पॉट है, उसको लेमन से ऐसे अच्छे से रब करो तो वो चमकने लगेगा. तो क्या होता है? मेटल हैज luster. Hardness. Generally metals are hard, not soft. Exception sodium and potassium are soft, but they can be easily cut by knife. मेटल्स तो सॉलिड होते हैं, जैसे कि टीन है, कुछ है, नीचे गिर गए बर्तन तो भी वैसे के वैसे ही रहते, उसका शेप चेंज नहीं होता है. लेकिन ये सोडियम एंड पोटेशियम है, ये इजीली नाइफ से कट होता है, बट दो अगेन कंसिडर एज अ मेटल. हियर द डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स व्हाट? इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग वायर. इससे वायर बनती है. हैव यू एवर गॉन टू ए गोल्डस्मिथ शॉप? Have you seen the goldsmith making a wire or gold or silver? When metal is pulled through a hole, its wire is formed.
दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मीन्स सबसे थीन जो वायर बना सकते हैं वो मेटल से बना सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज malleability. Take an iron nail, place on a platform and keep hammering it. After some time, you will see that the sheet is formed. This property is called malleability of metal. अच्छे से एक प्रेशर लगा के इसको जोर से मारो, उस पर एक मारते रहो नेल पे अगर मारा आपने तो आपको फ्लैट बन जाएगा। फ्लैट हो जाता है मीन्स क्या है, शीट बन जाता है। जैसे स्टील की शीट्स है, गोल्डन शीट्स है, सिल्वर शीट्स है, ये हम बना सकते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर्टी कॉल्ड malleability. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ हीट. टेक अ कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स at one its end, hit the other end and observe what happens. Discuss with each other. अगर आपने कॉपर प्लेट लिया है, अगर फिक्स किया इसको वैक्स, इट्स वन एंड हिट किया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी हिट करते जाएगा। तो क्या होता है, इट्स अ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. इट्स अ गुड कंडक्टर. मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इसलिए यूज़ करते हैं ना सिल्वर, कॉपर जनरली हम यूज़ करते हैं ना गीज़र में वगैरह, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Then next property is what? Conduction of electricity. Which metal are used to make electricity wire? That all of you know. It's a copper, aluminium, right? Metals are good conductor of electricity. Lead is an exception. Lead exception है, जो हम lead इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिस पेंसिल में होता है, वो exception है. Which is neither a good conductor or heat or nor a good conductor of electricity, right? Then next one is density. Metals have high density of sodium, potassium, lithium are the exception, having lower density in water than water. The density of lithium is only direct कितना है, 0.53 ग्राम पर cc क्यूबिक क्यूब. तो इतना कम है डेंसिटी. किसका कम है ये? This is all about lithium. So density is the part. Next point is melting point and boiling point. Each metal has its own melting point and boiling point. These are different. Generally metals have high melting points, boiling point. Exceptional Hg, Ga गैलेनियम, सोडियम एंड पोटेशियम के, ये एक्सेप्शनल है. सिल्वर, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है. जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. द नेक्स्ट वन इज सोनैरिटी. 10th वन कैरेक्टरिस्टिक इज सोनैरिटी. व्हाट इज द मेटल दैट यू स्कूल बेल इज मेड ऑफ? यस, किससे बना है अपना स्कूल बेल? हाँ, यस, इट्स वेरी गुड, आयरन से बना है. और जैसे से टिन करते तो आवाज़ आती है ना, वैसे बेल देते हो तो अरे चलो चलो नेक्स्ट पीरियड ख़त्म हो गया, या तो आपका स्कूल छूट गया, आपको समझ में आता है. क्यों? क्योंकि ऐसे प्रेशर लगाने से क्या होता है, आवाज़ आता है. तो इसे बोलते हैं सोनैरिटी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनैरिटी. व्हाट इज द मेटल दैट यू स्कूल बेल इज मेड ऑफ? हाउ डज द बेल इज फंक्शंस? मेटल्स आर सोनरियस, द प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग. उसको स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. These are the properties of metals only. Now we see here the properties of non-metal. Generally carbon, sulfur, phosphorus are the few non-metal. Generally non-metals are brittle and non-lustrous. Brittle means झट से टूट जाते हैं और उनको लस्टर भी नहीं होता है. There are some points like physical state, luster, brittleness, ductility and malleability, conduction of heat and electricity, density, melting and boiling point. In this non-metal, physical state is liquid or gaseous. Either is solids, liquid or gaseous. Okay, example है CSP, liquid, barium. Gases कौन कौन है? H2N2O2 means hydrogen, nitrogen and oxygen. Luster, non-metals have no luster except diamonds, iodine crystals. Diamond तो सबसे अच्छा luster है उसको, लेकिन फिर भी it's considered as a non-metal. Then brittleness. Take a coal or hammer it, what happen? It's cut into so many small pieces and dust means what? The property of brittleness is there. Ductility and malleability is totally absent because non-metals are neither ductile or malleable. इनसे ना ही तार बना सकते हैं,
ना ही इसका पतरा बनता है. Then conduction of heat and electricity, it's not possible. Non-metals are the bad conductor of heat and electricity except graphite, allotrope of the carbon, uh, which is very good conductor of electricity. Graphite क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी. डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, इनको डेंसिटी बहुत ही कम होती है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling points. Exception, the solid non-metals carbon and boron melt at high temperature. Okay, if you have any problem till this point, you may ask me. We will do continue this chapter in our next lecture. This chapter is coming to your this semester exam. That's why read properly. Your homework is read this chapter again and write down the properties of metals. Okay, in our next lecture we start the properties of metalloids, what is metalloids, and further we take the lesson which is not over. Okay, till then, goodbye.